एक मिनट हाँ। हेलो 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 हेलो। हम्म, 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 okay. uh Hello guys, this stream is a part of okay, sorry. This stream is a part of my education course, which is AIML. So basically in machine learning we are taught about machine, how does machine work, what is machine learning, etc, etc. A basic concept that we learned in machine learning was linear regression, which is when studying as an undergrad in any engineering field, be it related to computer science, okay? Be it computer science, information technology, or data science, or AIML. The basics have been taught to the students, and it is, you can say, an entry point where the student learns a bit about machine learning, which is linear regression, okay? So in this video, we will code linear regression code in C, not Python, because I want you all users to understand what is exactly happening under the hood. So C makes that more comfortable, more transparent with respect to the things we're doing here right now. Okay, so let me give you a quick overview that let me clear my screen first. Yeah. Okay, so refresh कर दे. Okay, no, okay, it's good now. It's good now. Let me do. So as you can see here, this is my whiteboard where I will basically give you an overview of what all things will I code in my you can say text editor, which is Vim as of now. I will use the language C and I'll code this following sequence of information I have written here. Okay, so given us values of x, which would be an array as of now, values of y, which would also be an array. Number of elements are 5 because there are 5 elements in each x and y. And we'll calculate the mean, which would be summing up or adding all the elements present in x and divided by 5, which is basically the total number of elements. Same thing we will do for y, because in y there are also 5 elements. We'll add all those 5 elements and divide those elements by 5. Now, an equation we have is, let me mute here, is that we know that y equals to, let's say, uh, y is equals to mx plus c, okay, where m is my b naught here and b1 is c, okay. Basically these are regression coefficients and intercepts if you uh, want to deep dive, but for someone who wants to understand linear regression in simple terms via code now, okay, uh, just letting you guys know that b naught or b0 is the slope and b1 is the intercept, okay. And it depends on how you name the variable here. I have taken b naught as the slope and b1 as the intercept, okay. You can take b1 as slope and b naught as intercept, no harm. Just make sure you apply the right formula to each and every variable or when you're calculating that variable, okay. So let us start, okay. So क्या हो गया? Yeah, I'm sorry, I'm so sorry. यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं आपको. Okay, so I'll start again, no problem. So as you can see here,
I'll do linear regression and oops. Take. So what I will do here is I have information about x, I have information about y. In this x, there are 5 elements. Same goes for y because also in y there are 5 elements. Now we will calculate the mean, which is basically sum of x divided by the total number of elements. And also for the y, we will do the same. We will sum up all the elements of y present here and we will divide it by the total number of elements. Now, in linear regression, there are many formulas to calculate this loop. One of the formula is sum up uh, each individual of x and subtract it by its mean multiplied by summing up all y elements and subtracting y elements by its mean, multiply those elements, sum it. Okay, in the denominator we took the same element here, we squared it and we also got the summation. Okay, summation of xi means each individual element of x, subtracting that each individual element by its mean value, which is x mean, squaring them up and adding them. Okay, now if you want to know how I calculated the intercept, I'm letting you guys know here. Okay, so we know that y equals to mx plus c. If we interchange everything, or you can say I do LHS equal to RHS. Okay, so RHS is LHS, so mx plus c is y. Okay, mx plus c is y, and we want to calculate the intercept, which is c. C is equals to y minus mx. Okay, got it. Now for the formula, for convenience, for the convenience of the formula in the linear regression, the formula goes as, we'll do summation here. Okay, now so what we'll do is, and yeah, no, and v, and divide this whole by n. Okay, that's how I got the formula for intercept, because I knew the formula of slope. Okay, uh this whole part is just for simplification. Okay, this whole part is just for simplification. Again letting you guys, so what I'll do now is, in C, the first thing I will do is I'll create, as of now, I create an array of, let's say, data type, you can say float, because I also want to store values which are precise enough. Like, okay, let's say values of 1.15, 1.2, values which are having uh, digits after decimal. Okay, so that goes here. Okay, I'll store this value in an array. I'll store this value in an array. Also, I'll calculate the size. Okay, I'll calculate the size. Then what I will do, I'll calculate the mean. Okay, which is basically sum. So sum divided by the x. Okay, I don't know how to do it here. Okay. So okay. Mm, Permanent tool. Okay, no problem. No problem. No problem. Okay. Okay. So I'll calculate the sum and divide it by the total number of elements. The next time I will do is I'll calculate the same for y. I'll sum up every element of y and divide it by the total number of elements present in y. Now, then I'll calculate slope, then I'll calculate the intercept. Then for the final prediction, what I will do, the moment I obtain values of b0 and b1, the slope and intercept, I'll exchange these values, or not exchange, I'll put this value in this formula here, present here. I'll put b0 here, I'll put b1 here. Now, since I have b0, since I have b1, and also I have x, I have x here, these values, these given values. Okay, since I have b0, since I have b1, and since I have x, I can easily calculate the predicted value of y, knowing the fact that I have mapped y is equals to function of x. Okay, for those who don't know, I'm letting you guys know. So y is a function of x. Okay, y is a function of x. If I put the value of 1 here, अगर मैं
Okay, so I want the value of y when x is 1. So uh, wait, yeah, blah blah blah. Okay, so यार क्या है ठीक ठीक है. So if I want to find out the value of y when x is 1, so it will basically be y when f is equal to 1, which is 4. मेरे को आंसर कैसे मिला? क्योंकि मैंने गिवन वैल्यूज ही दी गई है, वैसे इस तरह से मैंने गिवन वैल्यूज वैसे ही दी गई है आपको. ठीक है, लेट मी चेक. कोई है स्क्रीन पे? ओके, कोई है नहीं स्क्रीन पे, बट इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. सो आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो दैट in the given table or in the given values, I have already defined x and I have already defined y. I just want to predict next values of y. Okay, because the range I have given here is limited. Okay, the range here given is limited. Okay, so let's say I want to calculate value of y. Okay, here. Okay, value of y. Let's say value of y क्या होगी जब x मेरा लेट्स से 6 होगा या फिर मेरा x कोई रैंडम 45 होगा. तो मुझे आंसर को प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन ये गिवन डेटा पे. ओके, सो फार सो गुड. ओके, आई थिंक सो, आई होप सो आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको. सो ठीक है, अभी मैं वापस समझा देता हूँ आपको. मैं रुक जाओ एक मिनट. थोड़ा हार्ड हो जाता है यार बोलने को. बोलना इज़ वेरी हार्ड यार, बट ओके इट्स फाइन. I'll do it. ओके, सो टू चेक, मैं बंद कर देता हूँ पहले. Hello, 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 hello. I hope you're live, right? Mhm. ओके, नो डाउट. ओके, मैं इसको बंद कर देता हूँ यार. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सीन टू पे आता है यहाँ पे. अ, मैं आइटम को बोलता हूँ. ओके, दिस लुक्स गुड. ओके, दिस लुक्स गुड. ओके, हाँ ठीक है, अच्छा दिख रहा है. सो हाँ. फाइन, बट मैं बंद ही रखता हूँ उसको यहाँ पे. कोई बात नहीं. लेट्स डू सी डी पे गया और आई क्रिएट न्यू फाइल. ओके, वेम. सो आई एम लेटिंग यू गाइस नो कि मैं यहाँ पे फंक्शंस नहीं यूज़ कर रहा हूँ. आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द मेन फंक्शन. बिकॉज मैं अगर मैं फंक्शन बनाऊंगा ना तो अभी स्ट्रीम बहुत स्ट्रेच आउट हो जाएगी. सो स्ट्रीम को शॉर्ट एंड स्वीट, या फिर मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट को शॉर्ट एंड स्वीट रखने के लिए आई जस्ट यूज़ द मेन फंक्शन एज ऑफ नाउ. मेन फंक्शन में सब कोड कर दूंगा मैं. ओके, सो मैंने इंट मेन में क्या करूँगा पहले ना, फ्लोट एक्स बनाऊँगा. ठीक है, एंड इसमें दे दूँगा वैल्यूज़ 1 2 3 4.
Then I'll calculate float, which is y. Is equal to 670. Apart from this, मैं क्या करना चाहूँगा कि float x, yeah, float mean y, float mean x होगा mean y होगा, sum of x, float sum of y, उसके बाद mean x होगा mean y होगा, sum of x sum of y होगा, float size, फिर float की भी ज़रूरत नहीं है, I'll int size, size of x divided by size of x 0, sorry, okay. Then और क्या क्या वैल्यूज लगेंगे मुझे यहाँ पे, अंदर करेंगे, राइट, एक मिनट, लेट मी गो हियर, लेट मी check it is good, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, कोई बात नहीं, आई होप सो दिख नहीं रहा है, राइट, ठीक है, सीन टू पे आते हैं अपन, एंड वी विल कीप इट हिडन एज ऑफ नाउ, ठीक है, इन साइज ले लेते हैं अपन, और साइज लेने के बाद व्हाट आई विल डू इज साइज मैंने बताया, वेरिएंस लेना है हमें, नहीं वेरिएंस नहीं लेना हमें, साइज हो गया, और क्या एलिमेंट्स ले सकते हैं, साइज मीन सम, देन वो वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू, ओके, float y rt, which is also an array of size, ओके, फिर प्रिडिक्टेड हो गया, intercept, float intercept and float slope, ठीक है, I hope so. Let's start with summation of ones for int I is equal to 0, I is less than the size, increment I, then I'll do is sum of x equals to, इनको 0 डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, इनिशियली 0 होगा, सेम फॉर y, इनिशियली 0, एंड मुझे इस वैल्यू सम ऑफ एक्स को स्टोर करना है, राइट, एडिशन होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई डू सम ऑफ एक्स प्लस एक्स ऑफ आई, देन क्या, इसे मैं वापस से करूँगा इसके लिए, अपने सम ऑफ वाई वैल्यूज के लिए, ओके, सो फॉर integer j is 0, j is less than size, so plus plus, sum of y, that's one, sum of y plus sum of y, right, sum of y plus y, अब बचा क्या है, mean is mean x equals to sum of x divided by size, and mean y is sum of y divided by size, okay, so okay, return 0, okay,
So hmm, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया कि ओ वाई आप आए, वाई जी आना चाहिए यहाँ पे। स्पोकन कुछ है क्या लाइव स्ट्रीम पे? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्या देख लेते पहले ये है क्या क्या- हम्म, ठीक है कोई बात नहीं। आई होप सो दिख रहा है स्ट्रीम पे। हम्म, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे हम्म, स- अम, so, अब ये हो गया है फिर अम, क्या बचा? अभी हमें मिल गया है। ठीक है, अभी सीधा लगाएंगे फॉर्मूला फॉर। ठीक है स्लो एक्स माइनस एक्स इंटू सॉरी वाई आई माइनस मीन वाई। ओके ये पूरा द होल डिवाइड बाय एक्स आई माइनस मीन एक्स इंटू अगेन एक्स आई माइनस मीन एक्स। सो ये होने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको नीचे लिखा था पहले। एक्स है एक्स माइनस मीन एक्स वाई माइनस मीन वाई डिवाइड बाय स्क्वायर। ओके इट्स गुड। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे कि ठीक है इंटरसेप्ट लगाएंगे। इंटरसेप्ट इज सम ऑफ वाई सॉरी सम ऑफ वाई माइनस स्लोप। ओके से तो मैं ऐसे सम ऑफ वाई माइनस स्लोप स्लोप ई इंटू sum of x sum of x divided by size। ठीक है नाउ ये हो गया।
अब हो गया, स्लोप निकल गया, इंटरसेप्ट निकल गया है। नाउ क्या करेंगे अपन? विल डू इज, सॉरी सॉरी, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं अभी। ये सब निकल गया है, बट ओके। सो क्या है, अब इंटरसेप्ट तो निकल चुका है, बट हमें, हाँ, प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई भी निकालना है, राइट? सो कैलकुलेटर, okay, so would be mm, slope into x। uh, एक मिनट है, कुछ गलती हो गई क्या? स्केप, हाँ, uh, मिनट, क्या हो गया, कर गया, मिनट, so predicted value is slope times x hat, sorry, plus intercept, ठीक है। now oh, sorry, is anyone in the live stream? कोई आया है? कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, बट आई डू। यहाँ पे कुछ सीन हो गया क्या? एक मिनट, ट्रांसफॉर्म टू स्क्रीन, अब ठीक से दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। इंटीजर रो साइज प्लस प्लस, printf percentage point टू, comma। एक मिनट, लेट्स सी ये कोड कंपाइल हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी,
मुझे 4 5 6 7 8 आ गया। ठीक है, ठीक है, इसने अच्छे से प्रेडिक्ट कर दिया है, बट ठीक है। नाउ let me change values, okay, and let's see if this code will perform well if I change the values of x and y. Okay, and then, sorry, like, see, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिंपल चेंज कर दूंगा सबको। ओके, अब मैं 2.3 5.4 7.2 88 7.88 9.34 1.34 फिर 11.25। okay, that's all. And inside, okay, और मैं यहाँ पे कर दूंगा this is 9.22 7.45 99 point 9.45 9.22 again, नहीं 2 3 लेते हैं, okay, और t 34.56 4 हो गया ना 99.99। okay, also this is good. Okay. चलो, हाँ ठीक है, इस बार बल से लगा दिया, नाइस नाइस। सो ठीक है, लेट्स से कि स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज क्या आ रही है, ठीक है। सो again regression, let's see, and jump straight towards, yeah. So yeah, the uh, equation formed is y equals to percentage d times, or percentage, sorry, 0.2 times f times x plus can say 0.2 और फिर से परसेंटेज 0.3, सर एक्चुअली सच्ची रखते हैं अपन, okay, nice, this is the must be the equation, okay. Hmm. Hmm. Oh, okay, sorry, यहाँ पे 59J पे oops. Okay. Hmm. uh slash मैंने सेव तो किया था रे, वेट,
हम्म, अ, okay, so now I think so calculation has been performed and it is giving me some values to check if अगर मुझे चेक करना हो कि मेरा कोड बराबर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा. सो फॉर दैट लेट मी ओपन माय बोर्ड एंड आई परफॉर्म. ओके, दी सीन सीन वन पे आता है. सो जहाँ पे मेरा बोर्ड दिख पा रहा है आपको. ओके, सो इस बोर्ड पे मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन बना लूँगा जिसका मैं नाम देता हूँ लाइक लेट्स से y is function of x and that function is 2x plus 2. ओके, तो अगर चलो अभी मैं मैप करता हूँ वैल्यूज़. मैं x को 1 2 3 4 5 भी लूँगा और y की वैल्यूज चेंज होगी उसके हिसाब से, ठीक है. when x is 1, y is 2 into 1 plus 2, so 2 plus 2 it's 4. when x is 2, y is 2 times 2 which is 4 plus 2 6. when x is 3, y is 2 times 3 plus 2, 2 times 3 is 6, 6 plus 2 is 8. आई होप सो आपको आइडिया लग गया होगा कि आगे के वैल्यूज क्या होंगी. सो व्हेन x is 4, y is 10. Okay, when x is 5, y is 12. ओके, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली x को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे और y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ. ओके, तो मैं बस चेंज ये 1 2 3 4 5 रहने दूंगा. ये वैल्यूज जो है 4 6 9 12 17 मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा विथ 4 6 8 10 और 12. ओके, समझा. अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ और अब बातें अपन सीन टू पे आता है. ठीक है, आई होप सो मेरा क्या बोलते हैं इसको, मेरा टर्म विजिबल है सभी को. ओके, सो मैं क्या करूँगा अभी, आई डू इज विम लीनियर रिग्रेशन डॉट सी. यहाँ पे नीचे आके मैं इनसाइड ये कर दूँ. ओप्स, ओ वाई, पूरा कोड चला गया. डोंट वरी, है बैकअप. did inside this again 1 2 3 4 5. Okay, 2 into 1 plus 2 4, 4 6 8 10 12. देखा, इसने मेरे को इक्वेशन फॉर्म करके दे दिया. सो विच मीन्स दैट माई कोड इज एक्चुअली करेक्ट. देखो मैंने पहले कहा था कि मेरे को इक्वेशन रिलेट करनी है. ऑब्वियसली मैंने क्या किया, देखो देखो अब लीनियर रिग्रेशन का काम क्या है. अगर इनपुट आउटपुट वैल्यू से एक प्रॉपर इक्वेशन बना रही है ना, तो लीनियर रिग्रेशन ना हमेशा बराबर प्रिडिक्शन दे देगा आपको इक्वेशन का, कट टू कट बराबर प्रिडिक्शन, प्रोवाइडेड कि होल नंबर्स है इक्वेशन में, होल नंबर्स हैं और उनका आंसर भी एक होल नंबर है. ठीक है, आंसर भी एक होल नंबर है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर एक होल नंबर कह सकते हो. तो जैसे मैंने कहा कि मेरा इक्वेशन कहा था यहाँ पे, जैसे मैं आपको बोर्ड पे दिखा लेता हूँ कि सॉरी, जैसे मैंने आपको दिखा है कि देखो मेरे बोर्ड पे मैंने क्या दिया, मैंने इक्वेशन दे कर रखा था ना y कुछ 2x+2. मैंने मेरे कोड में मेंशन नहीं किया कि इक्वेशन इज y इज 2x+2. वो मेरा लीनियर रिग्रेशन का कोड एग्जीक्यूट करेगा, स्लोप कैलकुलेट करेगा, इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेगा और लास्ट में मुझे बताएगा कि अच्छा, बेस्ड ऑन द डेटा यू हैव प्रोवाइडेड हियर आपका इक्वेशन बन रहा है ये. तो समझ रहे हो, ये देकर ये निकालने से अच्छा मैंने क्या किया, मैंने ये जो गिवन वैल्यूज है वो लिए
उन वैल्यूज से मैंने इक्वेशन प्रिडिक्ट किया है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे लिमिटेड वैल्यूज़ के लिए आउटपुट पता थे। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे कोई भी इनपुट वैल्यू के लिए आउटपुट वैल्यू मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी स्लोप आ चुका है, मेरे पास अभी इंटरसेप्ट आ चुका है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ रहा, ठीक है, एक सिंपल इक्वेशन लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स से मुझे x इज इक्वल्स टू 92 के लिए कैलकुलेट करना है कि x फॉर x इक्वल टू 92, y की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू क्या होगी, 92 टाइम्स 2, 92 टाइम्स 2 इज 90 इंटू टू, 90 इंटू टू इज 180, 184, 184, 184 प्लस टू, ठीक है, विच इज 186। मुझे वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करूँगा, कोड पे आते हैं ना, कोड समझ लेंगे अपन लीनियर रिग्रेशन नोट से। अब लेट्स से 37 जी यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, कैलकुलेटिंग वैल्यू y when x is when x is, क्या मैंने x का दिया था, 92 दिया। ठीक है, सिंपल। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल अभी के लिए मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट आंसर इक्वल्स टू y when x इक्वल टू 2, राइट। सो आंसर मेरा y होगा और x मेरा 92 है। स्लोप, नहीं इंट आंसर नहीं होगा, सॉरी सॉरी, इंट आंसर नहीं होगा, फ्लोट आंसर होगा। फ्लोट इज इक्वल्स टू, फ्लोट आंसर इज स्लोप टाइम्स 92 प्लस इंटरसेप्ट। ओके, एंड ये कैलकुलेट, जैसे ये कैलकुलेट हो जाएगा, मेरे को आंसर लेना लिखना है कि आंसर इज परसेंटेज 0.2, और मैं यहाँ पे ये भी लगा देता हूँ ताकि ये प्रिंट हो जाए, एन आंसर, सॉरी आंसर। और यहाँ पे ऊपर जाता हूँ मैं, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कि वर्ड 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 आई स्लैश एन, यहाँ पे भी आता हूँ इंटरसेप्ट। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे इक्वेशन मिल गई है, मुझे इक्वेशन के साथ आंसर भी मिल चुका है कि वैल्यू ऑफ वाई बेन एक्स इज 92। अब जैसे मैंने आपको वाइट बोर्ड पे पहले भी दिखा दिया था कि, अच्छा मैंने वाइट बोर्ड ही रखा क्या, ओके ओके ठीक है, मैंने कोड कर लिया था। मैं रियली सॉरी कि मैं स्विच करना भूल गया, बट मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो मैं दिखा था आपको, मैं टर्मिनल पे गया अपने, मैंने लिखा विम रिग्रेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, रिग्रेशन डॉट सी इन द लाइन 57, नो नॉट 57। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने पहले बात एक फॉर लूप चलाई थी जिससे वाई प्रेडिक्टेड वैल्यूज दिख जाएंगे हमें, डॉट हो गया, फिर इक्वेशन, फिर मैंने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया जहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई कैलकुलेट करूँगा मैं जब एक्स की वैल्यू 92, यानी सिर्फ सादा सादा मैं ये बता रहा हूँ कि कैलकुलेट वाई व्हेन एक्स इज 92। ठीक है, वाई व्हेन एक्स इज 92। अब इक्वेशन यहाँ पे था, इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन इक्वेशन का था 2x+2, सो 2x+2 86 है। तो कैलकुलेशन यहाँ से होगा, स्लोप की वैल्यू, वो ऊपर से स्लोप की वैल्यू उठाएगा, फिर इंटरसेप्ट पे आएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट पे आ गया, एक मिनट, वी डब्ल्यू इंटरसेप्ट पे आ गया। ठीक है, अब इंटरसेप्ट पे आने के बाद मुझे कैलकुलेटेड आंसर मिल जाएगा। ओके, सो जैसे मैंने कहा, मैं वापस आपको
कंपाइलेशन और लीनियर रिग्रेशन दिखा लेता हूँ। तो जैसे दिख रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y इज दिस एंड इक्वेशन इज 2x+2। जैसे एज ए सेट कि मैंने 2x+2 अपने कंपाइलर को कहा नहीं है कि मैंने, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये इक्वेशन पे से डिफाइन नहीं की थी। मैंने बस स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करके उनको प्रिंट किया है आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ठीक है। उसके बाद मैं चाहता था कि अच्छा ठीक है, 1 x = 1 to 5 मुझे y के वैल्यूज़ पता है, 1 से लेकर 5 तक x इनपुट के y के वैल्यूज़ पता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इनपुट वैल्यू 92 के लिए उसका आउटपुट वैल्यू मिले, सो इक्वेशन पे जाएगी, इक्वेशन गई, 92 यहाँ पे गया, 92 यहाँ पे आने के बाद 2 टाइम्स 92 इज 184, 184 + 2 इज 186, और मुझे आंसर मिल गया 186। सो आई होप सो। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, इसको बंद करते हैं। एक मिनट। कोई बात नहीं, एक मिनट, इसको बंद कर लेते पहली बात। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आते लेकिन। सो मैं आपको क्या बताने जा रहा था कि आज के स्ट्रीम से हमने क्या सीखा। आज के स्ट्रीम से हमने सीखा कि हम सी में लीनियर रिग्रेशन के कोड को कैसे कर सकते हैं। और हाँ, ये कोड मैंने एआई के हेल्प से नहीं किया है, ठीक है, मैंने खुद से ये कोड लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आओ ऑब्वियसली ह्यूमन एरर्स है, ठीक है। एआई एरर नहीं करेगा इतना, अगर कर भी देगा तो अच्छा कोड लिख के दे देता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ पाए और आप खुद की बुद्धि यूज़ कर कर कोड लिख पाओ, ठीक है। दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे आप, पहली बात, जब भी आप कोई नई कॉन्सेप्ट या नई चीज़ को सीखते हो ना, आपका ब्रेन न्यूरल नेटवर्क के नए पैटर्न्स बनाता है, विच बेसिक, जो वो पैटर्न एक्चुअली वो क्या कहते हैं ना, वो न्यूरॉन्स से ग्रो करते हैं नए पैटर्न, जब आप कुछ नया सीखते हैं। ओके, सो आई होप सो आपको इस लेक्चर के थ्रू सीखने को मिला कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और मैं ऐसे ही स्ट्रीम्स करता रहूँगा। सो प्लीज़ नॉट डेव को सपोर्ट करते रहिए। स्ट्रीम अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, एंड स्ट्रीम पे अपना रिएक्शन ज़रूर दिया करें, थम्स अप और एनीथिंग, सो दैट आई नो कि ओके आप प्रेजेंट थे स्ट्रीम पे, आप मेरा स्ट्रीम देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरा स्ट्रीम देखते हैं, बिकॉज वो हैप्पीनेस अलग होती है, ठीक है। तो इसी के साथ अंत करते हैं स्ट्रीम का, अंत नहीं करते हैं, इस स्ट्रीम को एंड करते हैं यहाँ पे। आई होप सो आई सी यू गाइस अगेन।